So all right, let us start today's class. So you are talking about your second fundamental form denoted by this symbol. It was Bij, Dui, Duj, and this. So it is also a quadratic equation, bi-quadratic equation. And this Bij you can find by the formula. What was the formula for Bij? Rij dot n or minus Ri dot nj. And different formulas are there. And we did one problem that a surface is a plane if and only if its second fundamental form is how much? A surface is a plane if and only if second fundamental form identically 0. Is it clear? बताइए पराग वाष्प ने. Yes, sir. Last class we have done up to this. Okay. Yes, sir. So now let us check. यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए. No, sir. रजी अहमद, मोहम्मद शाहरुख. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है चीजें? Yes, sir. Clear. चलिए. बशर आलम. Yes, sir. Clear, sir. So you just keep practicing all the problems and concepts whatever I am teaching you here. One more problem we have. Let us take new problem. Show that for a sphere of radius A this is the relation ds2 is equal to a dot a into this second fundamental form. ds2 is what you know, is your first fundamental form है ना. ds2 क्या था आपके पास? ds2 was gij dui. So that will tell you the relation between this है ना. or you can say first is equal to a into second. अगर इसे मैं 1 से नोट कर दूं, just symbol ये आपको शो करना है ना. So you just try to understand the calculation. Most of the time we are doing calculation and then finding the results, and that is important. In your examination or in quizzes you will be seeing that these type of problems you will be getting, so you should know how to solve it. So ds2 if you remember, firstly is sphere के लिए आपको पता है what I will write. Firstly I will write the spherical coordinates. What is the coordinate? Who will tell? A spherical coordinates of the sphere. याद है? A cos theta, cos phi, A cos theta, Sin phi. and A
साइन थीटा। 90. इसका कोऑर्डिनेट ये आपको याद होने चाहिए, कई बार आई हैव यूज्ड इट सेवरल टाइम्स। So, or you can write cos u cos v also, a cos u cos v, a cos u sin a sin v. Okay, so we have already done your ds2. ds2 was coming a square d theta 2 plus a square cos square theta d phi 2. ये आता है, कैसे आएगा ये बताइए जरा, how it will come, कैसे आया था ये, क्या निकालना पड़ेगा मुझे, what I have to calculate here? You have to find your GIJs. This is your Yes, sir. ds2, है ना? RI dot RG. Yes, you have to find your GIJ. GIJ was RI dot RJ. So here G11 you will find. G11 means G theta theta. So it will be R theta dot R theta. Similarly, G12 will be G theta phi. So you have to find R theta dot R phi. है ना? And so on. So this we have done. You can see it from there. Otherwise, it is easily calculated. This is your DS2. Now I will find this second fundamental form also, and I will see what is the relation is coming. I know this is DS2. So for that, I will find all B's, है ना? Because this is your second fundamental form. So I need Bij. Bij means you need Rij dot n. So I will find my R theta. R theta आप already यहाँ निकाल चुके होंगे, वही लिख दे रहा हूँ. So R theta will be coming minus a sin theta cos phi. इसको आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लीजिए, कीपिंग phi as constant, minus a sin theta sin phi and a cos theta. Okay, then you can find r theta theta. So r theta theta will be minus a cos theta cos phi minus a cos theta sin phi and 0. Okay, 0 आएगा नहीं, सॉरी थीटा थीटा कर रहे हैं. Okay, so it will be a Minus A sin theta. yes with respect to theta करा हमने पहले, so minus a sin theta. Similarly, you can find r theta phi. Theta phi, अब इसको with respect to phi करिए. This will be as a constant, so minus minus plus, it will become a sin theta sin phi. Then this is also minus a sin theta cos phi, and with respect to phi it will be 0. Okay, so you got r theta phi. One more term you need, two term in fact you need r phi. So r phi will be how much with respect to phi करना r को, ये है r आपका. So minus a cos theta sin phi, a cos theta cos phi and 0. And r phi phi you can find how much phi phi is with respect to phi. So minus a cos theta cos phi minus a cos theta sin phi and 0. Okay, you got all these your r phi's. So now I can find this. What you can find now? B, है ना? क्योंकि हमें B निकालना है. I want to find a relation in this. So yes, what is B? You can find your B's now. बताइए कितना आ जाएगा B?
So let us check next page. So I know also, since n is how much? N was this n normal vector. It was r theta cross r phi Mod. upon ये नॉर्मल वेक्टर है ना, r1 क्रॉस r2 अपॉन मॉड ऑफ r1 क्रॉस r2. ये तो था. Yes, sir. जी sir. तो r थीटा क्रॉस r फाई अगर हम लिखना चाहें, देखो यहाँ पर, तो r थीटा क्रॉस r फाई लिख लें अगर हम पहले. दिस इज r थीटा क्रॉस r फाई, सो इट विल बी अ वेक्टर प्रोडक्ट. So you can write by using the determinant. So how much will be coming? अच्छा, तो I want to find n. n यहाँ पर अभी हमें जरूरत नहीं है, चलो निकाल लेंगे. n अगर निकालना है आप निकाल लीजिए. It will be coming minus a square cos theta cos phi cos theta sin phi, and it will be sin theta upon, इसका जब मॉड करेंगे तो इट विल बी a square cos theta. नहीं, n हमने निकाला, I will be using it. So this will be cancel out. You have minus cos theta cos phi cos theta sin phi and sin theta. ये वेक्टर n है इसका, स्फीयर का, है ना, नॉर्मल वेक्टर. इसकी हमें आगे जरूरत पड़ सकती है. आई कैन राइट इसे ब्रैकेट. इसमें n भी निकालना तो शायद आपका. ओके, सो आई विल फाइंड नाउ सेकंड. हमें रिलेशन तो शो करनी है. ds2 is equal to a5. तो ds2 तो आपके पास ये आ गया, इसे 1 रख दीजिए. नाउ आई विल फाइंड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म. व्हाट इज सेकंड? सेकंड के लिए यू नीड b11. सो b11 इज हाउ मच? r थीटा थीटा डॉट n, है ना, क्योंकि n चाहिए था ना मैं यहाँ पे. दिस इज द फॉर्मूला. कहाँ लिखा? ये वाला फॉर्मूला है rij dot n. So r theta theta dot n. So r theta theta is how much? I have just calculated this. Minus a cos theta cos phi minus a sin theta sin phi minus a cos theta. इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे इसमें. So this is your r theta theta. I am writing here minus a cos theta cos phi minus a cos theta sin phi minus a sin theta, है ना. इट वाज योर r थीटा थीटा. ये रहा है, सही लिखा हुआ है, तीनों में माइनस साइन है, ऑल द यस. एंड डॉट प्रोडक्ट विद n. सो डॉट ऑफ n. एक टर्म में निकाल के दिखा दे रहा हूँ पूरा. लेस टर्म आई विल राइट डायरेक्ट, यू कैन फाइंड cos थीटा इनटू माइनस साइन. आई थिंक सब में है ना ये. इट विल गो इनसाइड विद एवरी टर्म. ये sir, सब में होगा. सब में आएगा. सो यू हैव हियर माइनस साइन आल्सो. cos थीटा sin phi minus sin theta. So when you will multiply, dot product units will be some scalar quantity. First into first, सब minus है तो it will become plus. So a square cos square theta cos square phi, है ना. How much? देखिए, it will become a All Cos square theta cos square phi. plus, because minus minus plus a को बाहर आप कॉमन ले लिए, ये सब में आ रहा है. a I can take outside, plus a outside. So cos square theta sin square phi plus sin square theta. Now here I can take cos square theta common. So how much you have? Cos square phi plus sin square phi. It is 1. And you have here sin square theta. So it is again 1. So you have a. Okay. This is your b11. Similarly, you can find b12. So b12 will be what? R theta phi dot n. So it will be coming 0. अब चेक करेंगे क्योंकि r थीटा phi में यहाँ ये 0 है लास्ट टर्म, बाकी टर्म्स कैंसिल विल बी कैंसिल आउट.
एंड इसी तरीके से निकाल लेंगे लाइक आई हैव डन फॉर B11 and B22 will be how much? R of phi dot n. So it will be a cos square theta. Is it clear? Yes, sir. So now I can find my second fundamental form. What is the second fundamental form? So your second fundamental form is, so this is B11 du1 square plus twice B12 du1 du2 plus B22 du2. ये du1 स्क्वायर है ना, u1 अगर ले रहा हो तो du1 स्क्वायर du2 स्क्वायर या d थीटा d फाइव में लिख दें आप. यहाँ u1 is theta, u2 is phi. So it will be coming b11 is how much? It was a, so a d theta square, b12 was 0 and b22 was a cos square theta, so plus a cos square theta d phi square. Okay, and which you can write a d theta 2 plus cos square theta d theta square plus d phi. और ये क्या था देखिए आपके पास from 1 what it was, a square d theta 2 plus a square phi. क्या रिलेशन आई? ds2 is how much? a times of this, है ना? So ds2 is how much? From 1 a times of this, इसमें एक इंटू और कर दिए तो स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर. ds2 was this, a स्क्वायर था यहाँ पे, तो एक a से और मल्टीप्लाई कर सकते. Is it clear? Yes, sir. One more problem you will do. Show that for the surface of revolution, it is given by x is equal to fu cos v, y is equal to fu sin v, z is equal to hu. So show that for this your second fundamental form is f dash h double dash minus h dash f double dash upon under root f dash square plus h dash square du square plus f of h dash upon f dash square plus h dash square du square. ये आपको शो करना. So when you will calculate for this, again the same, here your fu and v. The first parameter is u, second parameter is v. f dash का मतलब क्या होगा? Derivative of f with respect to u. So you will have to find your b11. So when you will find b11, है ना, by the same formula, b11 is r theta theta dot n. Here it will become b11 is how much? R of u dot n, है ना? जब आप ये निकालेंगे तो it will be coming this. So this will be your b11 और इसमें आप देखेंगे b12 will be coming 0. And similarly you will find b2, which is the coefficient of b2. इसे अपने आप कर सकते हैं भाई ट्राई कैलकुलेशन ऐसे भी इसमें बोलिए. यस नो? Yes, yes, sir. चलो
कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ आपको BIJs निकालने हैं, फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ इस वाले फॉर्मूले सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वैल्यूज को निकाल के, देन यू विल सी it will be coming like this. So it is the second fundamental form for surface or reflection. Next topic we have Gaussian map and Gaussian curvature. Gaussian map and Gaussian curvature. Gaussian curvature. Okay. Suppose you have a surface in R3, of course, we are talking R3 surface only. Suppose you have a surface, some surface is there. In R3, I am denoting the surface by sigma, you know. Here it is your O, it is your R3. Here I have some point P whose normal is suppose given by this N, okay, and this point P is in some small area whose I am denoting by just omega. Okay, I have a surface in R3 denoted by sigma. In the surface, suppose surface को we denote generally by R, you know, this is your surface. So R is equal to R of U1, U2, and here I have a point P in some region omega. This is a region omega. Now I have a sphere in R3 again. Now you have suppose some sphere here. You have a sphere in R3, of course, and in sphere, this is a sphere. Suppose this is a sphere, and it is a unit sphere. I am taking this as unit sphere. अच्छा तो हम sphere को S2 से denote करते हैं because sphere is a two-dimensional manifold. Manifold you will study in your master classes. It is a two-dimension because it is a homomorphic to R2. Dimension 2. Suppose I am denoting by S here. So you have this sphere S, and here its center is. So what I am doing, I am sending this point P by some map G to P star in the sphere. So G is a map from sigma to S such that the point P in the surface is mapped on the sphere to P star. Suppose it is your P star in some region. Here also you have some region like this. और ये आपका region कुछ omega star region है. This region is omega star suppose. So G is a map from surface to S, sigma to S, okay, such that the region ओमेगा, ठीक, ओमेगा कहाँ है? इन द सरफेस, in the surface maps into the unit sphere S.
So now G is a map in such a way, suppose it is a center O. So G is a map such that which is mapping P to P star, है ना? जब G आपका ओमेगा टू ओमेगा स्टार मैप करेगा तो पॉइंट P को यहाँ कहीं P स्टार पे मैप करेगा डेफिनेटली, है ना? इसके हर पॉइंट को डब्ल्यू मैपिंग इन द स्फीयर. So the point P is mapping to P star such that OP star is equal to N. N is the normal to the surface. That means I can say what I can say. That means to every point. That means to every point P belongs to sigma. Sorry, sigma. This map assigns. This map assigns. Assign मतलब map कर रहा है, उसकी इमेज दे रहा है ना. A point assigns a point P star in S such that OP star is equal to N. मतलब whose position vector is OP star क्या हो गया? Position vector है ये. Whose position vector is how much? N. N क्या है? N is the normal unit normal to the surface. Then this map G is called. Then G is called the Gaussian map or the spherical map of the surface. क्या समझ में आया भाई? बताइए कैसा मैप है? गॉसियन मैप क्या कर रहा है? व्हाट इज डूइंग? बोलिए. एनीवन? किसी की समझ में आई बात? नहीं आई? बताओ भाई. यस सर. बताइए आदित्य साहब क्या कह रहे हैं, बताइए क्या मैंने बताया. सर एक ऐसा मैप है जो इस सरफेस के सारे पॉइंट को ऐसे पॉइंट में भेजता है जिसको पोजीशन वेक्टर एन के इक्वल. और वो पॉइंट्स कहाँ पर है? वो पॉइंट्स सिग्मा में. मैप कहाँ पर? मैप कहाँ हो रहे हैं? So from sigma to surface, yeah, from this region to this region. तो वो Unit सरफेस sphere. सरफेस क्या है? वो यूनिट स्फीयर है ना? यूनिट स्फीयर है. ऐसे कोई सरफेस नहीं है, है ना? Your codomain, yes, your codomain is a sphere. This is the point. So what you are seeing now? So you are, Yes, sir. yeah, you are seeing the points. What is the image of the point P on the sphere? कोई चीज आपकी प्लेन पर रखी हुई है, उसे उठा के आपने क्या करा? यूनिट स्फीयर की ओर पहुंचा दिया. तो जब यूनिट स्फीयर पे पहुंचाया तो हमने ये देखा कि ऐसा खास मैप जो पॉइंट P पे जो नॉर्मल था आपका सरफेस का, है ना, that should be the position vector of that OP star of the point P star. ऐसा मैप है वो, है ना? That map is Gaussian map. वैसे तो आप अगर पॉइंट P को स्फीयर में मैप कर सकते हैं, जी सर. लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि it is having this property that your OP star should equal to the normal vector. This type of map is called a Gaussian map. है ना? We need this type of maps in the study of differential geometry. We will see later where we will using it. So what is, so this is your Gaussian map. Next definition is
व्हाट इज गॉसियन कर्वेचर? तो इसमें ध्यान रखना है, टू थिंग्स ध्यान रखनी है। एक तो मैप आपका जो हो रहा है ये यूनिट स्फीयर पे होगा। सेकंड थिंग, ओपी स्टार विल इक्वल टू एन, है ना। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि सरफेस मैप्स टू द यूनिट स्फीयर। सेकंड, द पॉइंट पी मैप्स टू द स्फीयर सच दैट ओपी स्टार इज इक्वल टू एन, एन इज द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। ये दो इसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। सो गॉसियन कर्वेचर, व्हाट इज द गॉसियन कर्वेचर? Let a domain, this belongs to sigma, है ना। ये आपका सरफेस पे कोई रीजन है, बी मैप्ड टू द रीजन, बी मैप्ड onto the region, onto the region. Suppose here I was taking some star belongs to S by the map G. इस जी मैप से मैं इस पूरे रीजन को मैप कर सकता हूँ यहाँ स्फीयर पे, है ना। देन द गॉसियन कर्वेचर, द गॉसियन कर्वेचर, इसे हम डिनोट करेंगे के से, ठीक है। कप्पा आपका मैंने यूज कर रहा था कर्वेचर ऑफ द कर्व, स्पेस कर्व, है ना। ये आपका के है, द गॉसियन कर्वेचर के of the surface sigma at P is K is equal to limit this omega tending to P area of omega star over area of omega. This will tell you the Gaussian curvature. So what is you are saying that when your omega when this region is shrinking towards the point P, इसको हम shrink करना start करें, ठीक है। जब आप इसको shrink करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ changes आएंगे ओमेगा स्टार में। So the ratio between the area of region in sphere to the area of region in surface, है ना। What is the ratio when this omega tending to P? This will give you the Gaussian curvature, ठीक। That means the limit is, जो लिमिट हमने क्या लिया है, the limit is taken as the area omega. Limit is taken as the area omega shrinks to the point sigma, shrinks to the point P, to the point P. तो जब ये आपका ये एरिया, सपोज इट इज योर ओमेगा, it is point P. So when this started moving towards P, it is shrinking, then this ratio will give you the curvature, ठीक है। वर्किंग में कैसे यूज करेंगे, हाउ टू फाइंड इट, तो उसका एक फॉर्मूला है पास, वर्किंग फॉर्मूला, एक्सप्रेशन फॉर दिस। व्हाट इज द एक्सप्रेशन, है ना, इट इज द डेफिनेशन, बट इफ यू वांट टू फाइंड फॉर सम सरफेस हाउ टू फाइंड, उसके लिए आई विल फाइंड वन एक्सप्रेशन फॉर दिस गॉसियन कर्वेचर के। सो के से हमेशा गॉसियन कर्वेचर डिनोट करेंगे। तो आई विल फाइंड एक्सप्रेशन। सो वी नो दैट दिस बी वाज हाउ मच, आपका जो बी निकाला था याद है, B11, B12, B21, B22, है ना। और B11 की अगर वैल्यू हम रख दें तो एन, अगर मैं इसमें रख रहा हूँ, टू फॉर्मूलाज थे, एक डबल RIJ डॉट एन और एक था माइनस R1 डॉट N1, है ना। तो बिकॉज यू हैव फोर टर्म्स, सो आई कैन राइट N1 डॉट R1, N1 डॉट R2, all these are vectors, and N2 डॉट R1, N2 डॉट R2 ना। ये भी एक फॉर्मूला था, माइनस साइन विल बी एडजस्टेड। Bij का फॉर्मूला क्या था, माइनस Ni डॉट
rj by this. Okay, or when you will open it, the determinant, it will become how much? n1 dot r1 dot n2 dot r2 minus n2 dot r1 dot n1 dot r2. इसको अगर आप देखें, it is your vector product of 4 vectors. It is n1 cross n2 r1 cross r2, a cross b dot c cross d. It will be this a dot d dot b dot c minus a dot c dot b dot d, है ना. ये फॉर्मूला आता है, क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपका 4 वेक्टर्स का, मींस a cross b dot c cross d. and it was how much? तो ये आपके पास b की वैल्यू निकल कर आ गई. Is it clear? This is b. So that means you can say, so b is, I can write n1 cross n2 and dot r1 cross r2. ये हमने b ले लिया, इसे नंबर 1 करके छोड़, इसकी वैल्यू निकालते हैं. नाउ n1 cross n2 dot r1 cross r2 by the dot formula, product formula, what I can write? Mod a dot mod b cos theta. So mod of n1 cross n2 dot r1 cross r2 and cos theta. Is it clear? Yes, sir. Theta is the angle. Now I will find what is this angle. Now we know n1 cross n2, it is parallel to n. इसको अभी 2 रख दीजिए, I will solve it. पैरेलल टू n क्यों है भाई? अगर याद हो हमने किया था, ये आपका n यूनिट वेक्टर है, तो I can write n dot n is equal to 1. So differentiating, it will give you n dot n1 is equal to 0. Similarly, n dot n2 is equal to 0. क्या आया था आपके पास? n is perpendicular to n1, n is perpendicular to n2. So this implies that n is parallel to, yeah, na? If some vector perpendicular to a, perpendicular to b, it will be parallel to this. I can write this. And also r1 cross r2, it is also parallel to n. Why? क्योंकि आपको मालूम ही n का फॉर्मूला क्या है? r1 cross r2 upon mod of r1 cross r2. ये तो होता है फॉर्मूला. It means what? It is your root g. It means n is parallel to this. n क्या है? Some scalar times of some vector. It means what? n is parallel to this. So if these are parallel, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया? How much? 0, है ना? Angle is how much? 0. Both are parallel. So it means what? So you got b is